इंडिया का जो नेचुरल सोर्सेज है उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग अनुष्का। तो फॉरेस्ट इज ए पार्ट ऑफ biological environment, forest, and it is also source of wealth in different aspects, and wildlife also source to protect, to utilize, like the transports में यूटिलाइज करते हैं, प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, उसके बाद लेदर इंडस्ट्रीज में करते हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, एनिमल्स पर। ठीक है। नाउ वी ह्यूमंस along with all organisms, we human along with all living organisms from a complex web of the ecological system in which we are only the part of a very much depend on this system in our own existing. Ecological, to maintain plant kingdom, animal kingdom, human beings, ये इकोलॉजिकल बैलेंस है। जैसे कि आप सपोज करो, द प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म recreate the quality of तो अब फॉरेस्ट क्या है और वाइल्ड लाइफ। मान लो कि तू कहते कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ the true index of climate। जैसे ही हम लोग कहते हैं the plant, animal and microorganisms recreate the quality of the air we breathe, water we drink, and the soil that produce the food without we cannot survive। भोजन, वस्त्र, आवास, जल ही जीवन है। एयर के बिना हम नहीं सरवाइव कर सकते, फूड के बिना नहीं कर सकते। इट इज इसेंशियल है सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन के लिए। फॉरेस्ट आपका काफी इंपॉर्टेंस है सॉइल को मेंटेन करने के लिए, काफी इंपॉर्टेंस है। सो फॉरेस्ट play a key role in the ecological system as they are also the primary product on which all the living being depends। जितने भी लिविंग है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ की बात करो, फॉरेस्ट इज द हाउस ऑफ वाइल्ड एनिमल। फॉरेस्ट टू प्रोवाइड आपको क्या दे रहा है, इंपॉर्टेंस करता है कि ब्रीथिंग ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ द फॉरेस्ट। आपको प्लांट से आप ट्री जो उसके वुडन से है उसका यूटिलाइज करते हो फॉर मेकिंग फर्नीचर्स है, वुडन इंडस्ट्रीज है, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज है, रबर इंडस्ट्रीज है, गम इंडस्ट्रीज है, हनी हर्बल इंडस्ट्रीज है, आयुर्वेदिक इंडस्ट्रीज है। जितने भी इंडस्ट्रीज डेवलप है वो सारा डिपेंड है आपका नेचुरल फॉरेस्ट पर। फॉरेस्ट प्रोवाइड द फ्रेश एयर दे रहा है, रेन बियरिंग दे रहा है, शेडिंग का काम कर रहा है, सॉइल
स्टॉप द सॉइल इरोजन को रोक रहा है। जैसे ही हम फॉरेस्ट का हम मिसयूज करेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो वाइटल क्या है, द बर्निंग प्रॉब्लम के साथ है, क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग। सो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, यहाँ की फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज तो यूटिलाइजेशन करते हैं, यूज करते हैं फॉर अकॉर्डिंग टू योर नीड्स या फॉर द नेशन डेवलपमेंट्स के लिए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सारा डिपेंड्स है आपके इकोलॉजिकल बैलेंस करता है। नाउ अब सेकेंड है कि बायोडायवर्सिटी और बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस बायोडायवर्सिटी, द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज of plant, animal and microorganisms living on the earth is called biodiversity. There depends the natural relief features and climatic conditions. इंडिया की बात करो, ट्रॉपिकल है एंड टेम्परेट। इन द हिमालय रीजन एरिया वहां का फॉरेस्ट का लाइफ देखोगे, वहां के वेराइटी ऑफ द ट्रीज देखोगे, वहां वेराइटी ऑफ द एनिमल्स देखोगे, वो टोटली डिपेंड्स है वहां के नेचर ऑफ लैंड एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण। ठीक उसी तरह इक्वेटोरियल रीजन आ जाइए, टेम्परेट रीजन एरिया, डिफरेंट स्पेसिस प्लांट्स जो है वो आपका वेरी करता है। So biodiversity is important for human, for ecological life supports. Biodiversity gives a functioning ecosystem that क्या प्रोवाइड करता है? ऑक्सीजन, क्लियर एयर एंड वाटर। प्लांट pollution waste, control the waste water and treatment the tools of ecosystem survive. We depend on the biodiversity of our existing. कहता how human ये डिपेंड करता है, ये इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी है। वी स्टडी अबाउट द किंगडम इन फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। सो यू नो द इंडिया is one of the world's the richest country in the term of its the vast, I mean the biological diversity, richest पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट द रिलीफ फीचर्स है, चाहे वो हिमालय रीजन एरिया हो, चाहे वो प्लेटू रीजन एरिया हो, चाहे वो डेजर्ट रीजन एरिया हो, चाहे प्लेन रीजन एरिया हो, चाहे आपका डेल्टाइक रीजन एरिया हो, कोस्टल रीजन एरिया हो या आइलैंड रीजन एरिया हो। कहते हैं कि वेराइटी है, वेराइटी डिफरेंट, द वेराइटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। And had the nearly 8% of the total number of the species of the world, estimated to the 1.6 million. Possible the interest आप पोस्ट कर सकते हो कि so discovered already study the details of the existence and the variety of the forest and the wildlife resources in India.
एंड द रियलाइज करो कि हम लोग डेली, अब सपोज करो कि सब इन द एंशिएंट टाइम की हम लोग बात करते हैं कि फॉरेस्ट वुड कहते हैं कि डू यू नो द 80% इन द रूरल एरिया द पीपुल टू यूटिलाइज द फायर के लिए, यूज के लिए, कुकिंग पर्पज से। आप बताते कुकिंग पर्पज से वहां लोग लकड़ियां अभी भी देखोगे इन द ट्रैवल बिल्ट रीजन एरिया में कि वहां के ट्रैवल पीपुल जो है जस्ट द मूव इन द फॉरेस्ट रीजन एरिया, चाहे वो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हो या टेम्परेट फॉरेस्ट हो या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करो, कि वो फॉरेस्ट पे जाते हैं और वहां से वो लकड़ियां चुन के लाते हैं और उसी लकड़ियों पर वो अपना कुकिंग फंक्शन करते हैं, खाना बनाते हैं। अब देखो कितना इंपॉर्टेंस है। आप बोलो कि इन द जनवरी फरवरी मंथ ऑफ दिसंबर टू जनवरी द वेदर कंडीशन इज द टोटली चेंज, है ना। उस समय हम लोग अलाव जलाते हैं, हीट के लिए फायर का यूज करते हैं। वुड का हम लोग यूज करते हैं जितने भी अवेलेबल हैं, चाहे वो मेकिंग फर्नीचर्स में यूज करते हैं, चाहे वुडन इंडस्ट्री में यूज करते हैं, चाहे पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, चाहे उससे हम लोग रबर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, तो यूटिलाइज करते हैं। वो फॉरेस्ट हमें देता है, वेल्थ है। फॉरेस्ट का हम लोग जब यूटिलाइज करते हैं फॉर ओन पर्पस के लिए, चाहे पर्सनल हो या कम्युनिटी पर्पस की बात करो, नेशन की बात करते हैं, तो फॉरेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट द रोल प्ले करता है द और टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। मान लीजिए सपोज करते हैं कि सपोज के फॉरेस्ट के में द वाइल्ड लाइफ का जो जंगली जानवर जिसको लोग कहते हैं, वाइल्ड लाइफ का जो मेन होम है वो कहाँ है? तो फॉरेस्ट, जंगल। अगर हम अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने फायदा के लिए जगह हम फ्री करते हैं, पेड़ को काटते हैं, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो जाता है। नाउ हाउ ह्यूमन अफेक्ट how the human activities affected the depletion of the flora and fauna. Human activities affected the depletion of flora and fauna. So we know forest provide us with food. Forest provide us with food, bricks, leaves, rubber, medicine, dye, wood, fuel, ये हमें प्रोवाइड करते हैं और अपने ज्यादा लो ना बोलो, आवश्यकता के अनुसार हम इस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। रैपिड कहता है कि डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ द ट्री फॉर द सेक ऑफ एग्रीकल्चर। सो ह्यूमन बीइंग इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टर्ब आवर इकोलॉजिकल सिस्टम। जो एनिमल और प्लांट आपके टू मेंटेन द इकोलॉजी को बैलेंस करता है, वहां पे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस करता है। रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से हैव लेड टू द क्लियरिंग द फॉरेस्ट। लगातार तेजी से हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं
तो उसका साइड इफेक्ट देखो कि डिप्लेक्शन द वाइल्ड एनिमल, वो प्लायन हो जाता है, माइग्रेट हो जाता है। जो फॉरेस्ट हमें फ्रेश एयर दे रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर रहा है, रेन फर्टाइल सॉइल हो रहा है, टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहा है। जैसे ही हम क्लीन करते हैं, कटिंग करते हैं, ये सारा क्यों करते हैं? क्योंकि हमको अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण है। तो एंड डिप्लेक्टिंग द फ्लोरा एंड फौना। सेकेंड पॉइंट, ए लार्ज पॉपुलेशन मीन्स मोर फूड। नेचुरली है, जितना ज्यादा आपका पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ेगी, चाहे बेसिक नीड, चाहे वो फूड हो, शेल्टर हो, क्लॉथ की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, फूड रेंट की बात करते हैं। टू कट मेक आवर वे द एग्रीकल्चर। ए लार्ज पॉपुलेशन मीन्स मोर फूड प्रोडक्शन, नेचुरली है। तो फॉरेस्ट हैव टू बी कट, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, कटिंग ऑफ ट्री फॉर द सेक ऑफ एग्रीकल्चर। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आपको खाने की प्रॉब्लम हो जाएगी, फूड ग्रेन्स चाहिए, तो आपके लिए लैंड चाहिए, तो लैंड अवेलेबल है, फॉरेस्ट लैंड अवेलेबल है, वहां से हम लोग यूज करते हैं। मल्टीपर्पज लार्ज डैम, मतलब multi-purpose project and large dam have also caused the submergence of the tree and forest। जब हम कहीं पर, चाहे वो रिवर गंगा की बात करो, महानदी की बात करो, या इंडस या सतलज रिवर की बात, जैसे ही हम कोई बड़ा सा डैम बनाते हैं, तो उसके आसपास के जितने भी फॉरेस्ट एरिया है, वो सारा आपका एरिया जो है वो सबमर्ज हो जाता है। तीसरा है, ये ह्यूमन एक्टिविटी, ये सारा एक्टिविटी जो है वो डिपेंड करता है आपके फ्लोरा और फौना पर। माइनिंग एक्टिविटी इज द अनदर रीजन फॉर द डिप्लेक्शन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। सो सम activity affect some activity affect like a deforestation, second cutting of tree, third multi-purpose river valley projects, and mining activity is the another reason for the depletion of the flora and fauna. Depletion of flora and fauna. Now, Kataki, do you know what are the negative factors that such causes of the depletion of the flora and fauna? What are the negative aspects या negative factors that cause such careful depletion of the flora and fauna? क्या negative factors होंगे? So we know we have the transform nature into a resources। हम लोग नेचर जो प्रोवाइड किया है, चाहे वो लैंड हो, सॉइल हो, वाटर हो, फॉरेस्ट हो, वाइल्ड लाइफ हो, नेचर जो प्रोवाइड किया है उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, जस्ट चेंज करते हैं विथ द हेल्प ऑफ द टेक्निक
टेक्नोलॉजी के मदद से, तो चाहे वो ट्रांस रिसोर्स ऑब्टेन्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द फैक्टर्स, चाहे वो डायरेक्टली करो या इनडायरेक्टली, या फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ, we have the transform nature into a resource obtained directly and indirectly from the forest and wildlife. It is we, our slave, we have the depleted our forest and wildlife. So what is the major cause? Major cause of the depletion of forest resources between 1951 to 1980. So, किसके? According to the Forest Survey of India, over the 26,200 square, the large-scale depletion project have the contribute the significant to the loss of the forest. Naturally, जितना भी हम लोग लार्ज स्केल में, चाहे आज फॉर एग्जांपल देख लो बोकारो आयरन सिटी, वो एक समय में वो टेम्परेट फॉरेस्ट था, आज उसके कारण क्या है कि लॉस, बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स का लॉस हुआ है. In 1951, over 5,000 square kilometer forest was cleared for the river valley projects. ये भी एक नेगेटिव फैक्टर्स है, चाहे वो नर्मदा हो, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश, which would the in unlimited the hectares, 4,000 hectares of the forest. So ये सारा फैक्टर्स है. उसके बाद अब आ जाओ तो फॉरेस्ट फ्लोरा और फोना का आपके इंडियन लैंड, आपके इंडियन लैंड फॉर्म पर उसका क्या इफेक्ट करता है वो देखना है सबसे पहले. उसके बाद आप देखोगे इसके सब इंपॉर्टेंट स्पेसिस की बात करते हैं, वो देख रहे हैं कि नाउ वी लेट now understand the different categories understand to different categories to existing the plant and animal based on international union for the conservation, international union for the conservation of nature and natural resources, nature and natural resources classified
classified follow. Normal species whose population limits are the considered to be the normal for their the survival, such as the cattle, soil, pine, and rodents. Second है endangered species. India wild asses, India rhinoceros, lion till the sangin also. Example, black buck, crocodile, Indian level. थर्ड कैटेगरीज में दिया गया है. थर्ड है vulnerable species are species who the population has the decline to live from the where is the likely to move the endangered category in the near the futures. It is if a negative factors continue the rates. Population has declined to the live from. तो क्या है? एथेटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन. नेक्स्ट आपका स्पेसिस स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू द endangered vulnerable categories if some important categories are based on the Indian International Union for the Conservation of the Nature and the Natural. Now, the last conservation of forest and wildlife. We often ignore that in Indian forests are also the home of some of the traditional communities, like a tribal people, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करो या प्लेटिजन एरिया की बात करें, संथाल परगना की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं हम लोग. In some area of the Indian local community, why do we need to conserve flora and fauna? Why do we need to conserve flora and fauna? Why? We need to conserve because the conservation process of the ecological diversity and our life support system. Water, air, and soil. It is also the preserve and the genetic diversity of the plant and animal are better species. Breathing of them. So in agriculture,
where are they still depend of the traditional crop rearing? Depend करते हैं. So today discuss one biodiversity, flora and biodiversity, how activity affect flora, then the conservation of forest and wildlife. To protect, let's discuss the tomorrow some methods to protect, to conserve wildlife and forest. एक तरफ देख रहे हैं कि फॉरेस्ट काफी बहुमूल्य है, उसको बचाना है, नहीं तो स्कार्सिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर का लेयर आपका कम हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, लैंड ड्राई हो जाएगा, सो डिफिकल्ट टू सरवाइव, क्योंकि आपको प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा, फ्रेश एयर नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा, लैंड की फर्टिलिटी डे बाय डे खत्म होते जाएगी, तो आप एनिमल ग्रो कहाँ करोगे, प्लांट ग्रो कहाँ करोगे. ओके, थैंक यू. टुमारो